And this is not a moment of temporary silence, but to step back into your eternal truth. Truth that is ever present. Truth that never changes. Because everything stands and falls on this foundation. So firstly, congratulate yourself for making this time for yourself. The one who's taking care of everything is the one who's most ignored. So in these sessions, light will be shone upon the eternal truth of the being. That is making everything happen. For some, it may be a huge paradigm shift. Because a deep desire in each and every soul is to know his true self. But at the same time, one has been feeding the non-self. And so we realize this is not a process of becoming, but attention and letting go. Of that which is not you. Om Shanti.
wanted to make it very clear that the main purpose of Raj Yoga course is not to add new beliefs to your mind or to try to convince you of anything, but to bring about a shift in consciousness, that is to say, to awaken the real you. Yeah? And we know that today, what is our current paradigm of seeing ourselves as? The way we really see ourselves as is, this is my body, this is me, this is my name, that name is me. And that's how we see ourselves. And we feel that this planet, this earth, is my home. And my relationships are all other bodily beings. That is our current paradigm of how we see ourselves and how we see others and what we believe to be ours. Yeah? What we are saying is that there has to be a shift in that understanding of the self. And it will really help to have these small stories to help us understand that how we are attached to a wrong identity of the self. And we have forgotten who we really are. So there's this beautiful story, and I really like it because it speaks volumes about, simple story, but it speaks volumes about our displaced understanding of ourselves. So there's this person called Derek. Derek has a dog. And he loves his dog. Dog loves Derek, and Derek loves dog. And they both go together every day out for a walk. Wherever Derek goes, dog goes. If Derek goes to the supermarket, dog goes with him, waits for him in the car. If he's having a shower, then the dog will wait outside his shower door and wait for Derek to come out. So there's a lot of deep connection, a bond between the two. But then one time Derek has to go for a long trip. And when he goes for a long trip, what happens is with the dog is he starts to miss Derek. So he holds on to Derek's shoe. And he starts to believe that this is Derek. Yeah? And so what happens is anybody who touches that shoe, he barks at them. He doesn't want anybody to touch that shoe because he feels that they're touching Derek. They're taking Derek away from him. Right? Anybody recognizes this phenomenon? Yeah, like sometimes you have souvenirs or something given by grandparents or something given by parents, and somebody tries to move it from one room to another. It could be just a picture, some souvenir or some relic of some remembrance of grandparents or parents. And somebody says, no, we don't want it, throw it out of the house. How do you feel? How do you feel? You feel attached? You feel hurt? Because it's something that belonged to your mother, and they're saying that you can't keep it, you don't need it, and you feel hurt. Because it's as though that thing is reminding you of your mother, and you're attached to your mother. And so now anything that happens to that thing, it's as though it's happening to you and your mother. That is how we see that we have really started treating things as people. And how do we know? And this phenomena, we are giving the story because it goes far greater than what it appears. And we do not even realize it and recognize it. And today, what is the story? We are attached to our bodies. We think bodies is the self. We see the other's bodies as mine, my mother, my father.
anything happens to their body is a huge sense of worry that comes with it. Anything happens to one's own body, a huge sense of loss and panic that comes with it. Is that true? Because when I start to believe I am my body, it's like the dog believing shoe to be Derek. Yeah? That body is the shoe. Body is the shoe. And what is wrong with being the body, feeling I am the body? What is wrong with that? That I am my body. So what if I believe I'm my body? If anything hits the body, then I will feel that I am being hurted. So everything, when I will leave the body, so again the feeling would be again very terrible, that uh, Yeah. As though I'm losing, so anything that comes with the body is mine or me, right? So what happens is that body has a beginning and an end. The soul that owns the body has no beginning and no ending. So when the soul starts to identify with the body as me, starts to live in subconscious panic. Subconsciously, there is a panic that is created because the immortal being is beginning to believe himself to be mortal now. And so the panic is felt. And this is there internally, that fear is living now in the mind of the soul today. So that is why that insecurity sets in the moment I believe I am my body. this That fear is is in the subconscious mind. in the subconscious mind. Yeah, consciously we may say that I'm not afraid of death. But subconsciously we are living our life afraid of death all the time. Yeah. So does it mean that we are bonded within our own body? Yeah. So instead of having a bond, a healthy bond with my body, I have a bondage of a relationship with my body. It has become a bondage now. Anything happens to my body, I start feeling threatened. I, the real self, starts to feel threatened. And that is what is happening. I've Is started that believing. why we are always fear? Like we always have fear? Yes, one of the main reasons of fears, subconscious fears, is believing to be the body. And that which comes with the body is also me or mine. So anything that comes with the body, there's always a accompanied sense of fear, loss, insecurity. All these feelings begin to take over the moment I, the immortal being, start to believe I am the body. That's a but yes. it is really highly hard to detach our body with the soul. It is Mhm. almost it almost seems to be next to impossible. Uh-huh. Right now, yes. Right now, yes. But as we will go through the course, things will become clearer, and also want to make sure that it's very clear. It's like the beginner's course is like the ABC, going to kindergarten, right? And to feel after going to kindergarten, I'm ready for medical college, university, and medical, being a doctor, it's not possible. Yeah. So coming to foundation course is like coming to the kindergarten. And then the process starts after. This is right now, we are sharing the understanding, the knowledge, the information. Yeah. And it will be up to you how much you can take it in at this point also, and keep an open keep an open perspective. That which has been shared is something which may look to the mind as impossible, but impossible is possible by the self. Yeah, because Yeah, mind will create lots of doubts.
Mind can create many questions, and that's all okay. Questions are important to ask for clarity. But the doubts that are there, they're also there to be observed, but not to be identified with. Yeah. Yeah, totally agreeable. Yeah. So keeping, and this is because we are doing this for ourselves and for no one else. Yeah. So Yeah, let us just, yeah. So to understand that the mind may be saying right now it's impossible, but as we will break it down further and further, and it's a very in-depth course. So we will break it down further and further, and you will see that how it is actually not only possible, but it's actually normal and easy. It may yeah, not feel like that, but it will become that. Yeah. okay. Yeah. So, does it also mean that we are going to do our body cleanse, or it will be just that will detaching our body so that we can discover our soul? Yeah, so you will see how, as I come to know myself, how I take care of my body also changes in a natural way, without any effort or without any kind of needing to do it out of force. Yeah, because the more I, the soul, awaken, easier it is to take care of everything. Abuse of the body also happens because of the lack of awareness of who I am. So that is why this understanding of who I am has to be very, very clear. And awareness of who I am, it is a very big subject, and yet a very simple subject, but at the same time, a very deep subject. Yeah. Because the function of the awareness is what another word in Hindi, we call it smriti. Smriti is awareness. Who am I? When I wake up first thing in the morning, and you see yourself in the mirror, what do you see? How do you see yourself? Uh, a defective body. That's what I see it as. Defective body. Okay. Thank you for your honesty. A defective body. Yes. And what else? A face, a name to it, right? And a personality attached to that name and the body. True? Yeah, definitely. Another identity, physical identity. Another physical identity, we see that, right? That's what we think of ourselves today as, right? And function of Definitely. smriti, yes. Yeah, Function of, definitely. Hmm. yeah. Okay. So function of smriti is very important function to understand, because this smriti, this awareness will go with me in my waking hours, wherever I go. My thoughts will be created based on that smriti, on that awareness. So active thoughts are really coming from which awareness you're living in. Yeah. Who we feel we are, how it affects our outlook, our relationships, our feelings. It is all a hidden function. So we will see why it's important to really know who I am, because thinking positive is also not possible unless you know who you are. There are many positive thinking books filled, libraries are filled with, the shelves are filled with positive thinking books. And yet, it's not that the world is becoming positive. In fact, it's becoming more and more negative, right? And what we will see is it's because the underlying seed issue is not addressed. And the underlying seed issue is that who am I is not in the right place. The understanding is not there of who am I. And we will see through certain examples and it will become clearer. So to get a sense of what false identity is, and these false identities are living in our mind in the form of a very non-active thoughts. Yeah. So for example, do you wake up in the morning that you need to remind yourself that you are a man and you are a woman, or you are in America or you are in India? Do you have to remind yourself that? No, not at all. Not at all. बिल्कुल याद नहीं दिलाना पड़ता ना. Yeah, definitely. हाँ, क्यों?
वो एक स्मृति बन गई है, वो एक अवेयरनेस बन गई है. That has gone into my awareness now. And I have started seeing myself as an Indian, as an American, and as a woman, as this profession. I have started seeing myself from that perspective. I have become that perspective. Now, मेरे thoughts भी जो आते हैं ना, उसी lens के through आते हैं thoughts. Right? So, अभी एक इतना beautiful example उन्होंने share किया. I see a deformed body. I see myself as deformed, or I see a deformed body. Two different things. Two different things. तो उसका एक एग्जाम्पल देते हैं. हाँ जी. If you say you see yourself as defective or your body is defective, I mean, if I see myself as defective, then I mean, I guess it's extremely bad thinking. Like if your soul is turned out to be It's not bad, bad. then It's not okay. bad. It's just that the awareness is in the wrong place. That is all. Nothing is bad or good. We're not judging ourselves for whatever the awareness may be right now, and that's okay. That's fine. It's good to know it. That's what's most important. Yeah. So if I see I am defective, then I, the being, need to just see that I, the being, am identified with my body. That is all. And if I, the being, see my body is defective, then that's okay. I'm grateful for whatever. As of now, we are not able to identify who exactly we are. So we Yeah. cannot make sure, we cannot label this line that we are defective or our body is defective. Yeah. Yeah. तो At this उसको point of समझना. time, we are not able to identify this. Yes, yes. So what we have to do is first we have to understand the function of smriti, the function of awareness, and it will show you how it affects our outlook. Yeah. So there's this person called Sally. Yeah. And Sally is a manager in a company, and Sally has a mother. But Sally's mother has just recently left the body, and Sally used to live with her mother. Yeah. And she was very attached to her mother because she and her mother, they were the only two people who lived in the house. And Sally's job was doing very well. She was doing her job very well. Her job was going very well. So when Sally would come to work, she was very, very happy. As a manager, everybody was appreciating her. Everybody was liking her. And she was just very happy about it. And then what happened is when she would go home, she would feel very unhappy. She would feel very lonely. She would feel as though she has lost something. But then she started to realize what is happening here. When I go to work, I'm very fine. But when I come home, I feel alone, lonely, and I'm crying. And what is happening? Kya ho raha hai mere saath ye? So then she sat with herself and she realized कि मैनेजर की स्मृति में वो बहुत खुश है क्योंकि मैनेजर की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. तो ऑफिस में जब जाती है वो भूल जाती है कि मेरी मदर नहीं है. वो वाली स्मृति काम में आ रही होती है, उसकी मैनेजर की स्मृति, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है स्मृति में. तो शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. अब आती है घर पर, डॉटर की स्मृति एक्टिवेट हो जाती है. अब डॉटर की स्मृति में शी इज लॉस्ट द मदर. So she's feeling the sense of the loss of the role of a daughter actually. उसको realize होता है कि मैं daughter role, मुझे कोई mother, मैं किसको mother बोलूं, कोई मेरा कोई है ही नहीं. तो उसको sense of loss feel हो रहा है ना. तो वो उसको पता चलता है मेरी स्मृति जो है daughter की, वो mother को miss कर रही है. क्योंकि मैं ऑफिस में होती तो मुझे वो याद नहीं होता है, मैं भूल जाती हूँ. तो जो स्मृति वो मेरी स्थिति, जो मेरी स्थिति वो मेरी वृत्ति, ये मेरा एटीट्यूड बनता जा रहा है. तो क्योंकि मेरी स्मृति मैनेजर में अच्छी है तो मेरी स्थिति भी बहुत खुश है. डॉटर की स्मृति में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने अभी मदर को लूज किया, आई हैव लॉस्ट समथिंग एज अ डॉटर. तो ये है स्मृति का फंक्शन. एक और एग्जाम्पल देते हैं, है ना. तो स्मृति हमारी स्थिति को दीदी डिसाइड. क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पे? जरूर.
आपने बोला कि जब वो सैली ऑफिस में जाती है तो ऑफिस ठीक है और उसकी स्मृति अच्छी है। घर में आती है उसकी, क्योंकि शी लॉस्ट हर मदर, तो उसकी स्मृति अच्छी नहीं है। लेकिन इन दोनों केसेस में उसको वही दिख रहा है और वो वही कर रही है। तो स्थिति वही जो दिख रहा है या फिर स्थिति वो जो नहीं दिख रही है? नहीं, स्थिति उसकी स्मृति थी डॉटर की और मैनेजर की। ये स्मृति थी ना उसकी मैनेजर राइट। की। हाँ, मैनेजर की स्मृति में क्योंकि मैनेजर का सब कुछ अच्छा चल रहा था तो बहुत अच्छी थी, खुश थी। डॉटर की स्मृति में मदर को लूज किया था तो लॉस का सेंस फील हो रहा था उसको और वो दुखी थी। तो उसकी स्मृति जिस रोल के ऊपर थी उसके अनुसार उसकी स्थिति भी थी। तो जैसा रोल वैसी उसकी स्थिति। अब ये एक एग्जाम्पल और है, इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक है कि देयर वाज दिस पर्सन, डॉक्टर, उसके फ्रेंड की उसने बॉडी छोड़ी थी उसके फ्रेंड ने, तो वो मिलने गया था। Then he saw that the parents were very unhappy because this, he was the only son and they lost their only son. So he started feeling very emotional. He started feeling very sad. And then eventually he started feeling he was on the verge of tears. है ना, वो बिल्कुल उनके इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ गया, क्योंकि फ्रेंड के पेरेंट्स हैं, उनका एक ही बेटा है, शरीर छोड़ दिया, अब कौन उनका ध्यान रखेगा, वो स्मृति में चला गया वो। तो नेक्स्ट क्या हुआ, उसने देखा सामने एक फ्रंट रो में कोई थी, वो नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिर गई तो उसको अपनी डॉक्टर की स्मृति याद आई। उसको याद आया, वो सब कुछ भूल गया एक सेकंड में। उसको एकदम से याद आया, अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, और वो डॉक्टर पेशेंट का ध्यान रखने में बिजी हो गया, तो सारे इमोशंस और सब कुछ भूल गया उसमें। उसको फिर याद आया कि एक सेकंड में हुआ ये उसके साथ। जैसे ही उसकी स्मृति बदली फ्रॉम फ्रेंड टू बीइंग अ डॉक्टर, उसके इमोशंस ही बदल गए, उसकी फीलिंग्स ही बदल गई। तो स्मृति कितनी की है हमारे लिए, है ना। मेरी स्मृति क्या है? अगर मेरी स्मृति है, एक नहीं, हमारे मन के अंदर कई स्मृति होती है। जैसे आज रिनी है, वाइफ का भी रोल प्ले कर रही है, डॉटर का भी रोल प्ले कर रही है, डॉटर इन लॉ का भी कर रही है, मदर का भी कर रही है। तो कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट स्मृतिज हैं एक ही माइंड के अंदर, बहुत सारी डिफरेंट स्मृतिज है ना। तो मुझ आत्मा को ये क्लियर करना होगा, मैं आत्मा हूं, बॉडी मेरा एक टूल है जिसको मैं यूज करके डिफरेंट रोल्स प्ले करती हूं, डिफरेंट रोल्स प्ले कर रही हूं मैं आत्मा बॉडी के थ्रू। ये क्लियर हो। नहीं तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्मृतिज अटैक करेगी। देन दैट सन की जो स्मृति होती है ना, डॉटर वाइफ और मदर के बीच में कॉटअप फील करती है। सन की जो स्मृति होती है, मदर एक तरफ खींचती है, डॉटर वाइफ एक तरफ खींचती है, उसको लगता है मैं किस तरफ जाऊं, मैं तो दोनों के बीच में फंस गया क्योंकि उसकी अपनी स्मृति ठीक नहीं है उसको अपनी स्मृति ठीक करनी होगी। मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। जब मेरी अपनी स्मृति ठीक होगी तो मैं उन दोनों के रोल्स में नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैं अपने भी रोल में नहीं फंसूंगी आत्मा। तो दीदी ये हर जो भी वो रोल में है, वो हर सिचुएशन के साथ उसको एक्ट कर रही हैं, और अगर वो सिचुएशनल सही एक्ट कर रही हैं तो अच्छा वो फ़ील कर रही हैं। अगर वो सिचुएशन कोई भी डिफरेंट होती है तो वो अच्छा नहीं फ़ील करती। तो इज़न्ट इट ऑल सिचुएशनल कि जहाँ पे अभी अभी जैसे अगर आप अपनी बात करें, तो अभी आप पढ़ा रहे हैं, तो आपसे सब पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं और मैं भी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स सिचुएशनल। एक एक बाबा का ज्ञान चल रहा है। अगर थोड़ी देर बाद आप अपनी सिचुएशन दूसरे में जाएँगे जहाँ पे आप मदर इन लॉ हैं या फिर डॉटर इन लॉ है, सॉरी, तो आपकी सिचुएशन दूसरी हो जाएगी, तो आप यू विल एक्ट लाइक दिस। सो हाउ विल यू कोऑर्डिनेट थ्रू आउट कि ये अगर सारी सिचु ये सिचुएशन बेस्ड नहीं, ये रोल बेस्ड हुआ ना।
डॉटर इन लॉ की स्मृति, फीलिंग्स अलग. एज एन इंस्ट्रूमेंट की स्मृति, फीलिंग्स अलग. अगर मैं वाकई में आत्मिक स्मृति में हूं, रियल स्मृति में हूं, तो न मेरी फीलिंग्स इंस्ट्रूमेंट रहते हुए बदलेगी, न मेरी फीलिंग्स डॉटर इन लॉ के रोल में बदलेगी. अगर वो फीलिंग्स बदल भी रही हैं, कुछ अलग फीलिंग्स आ भी रही हैं, तो वो मुझे डिटैच होकर दिखेंगी, क्योंकि मैं अपनी रियल स्मृति में हूं. तो मुझे सारी लोअर स्मृतिज के थॉट्स और फीलिंग्स भी दिखेंगे. ओरिजिनल स्मृति में जब आत्मा होती है तो उसको सारी लोअर स्मृतिज के थॉट्स और फीलिंग्स दिखते हैं. फिर वो उस पर एक्ट नहीं करती है. वो चूज कर सकती है कि मैं उस पर एक्ट करूं कि ना करूं. अब मान लीजिए जैसे मैं आत्मा अभी इंस्ट्रूमेंट का रोल प्ले कर रही हूँ, फिर मैं आत्मा अभी जाऊंगी और लेट्स से वाइफ का रोल या डॉटर इन लॉ का रोल प्ले करूंगी. तो हो सकता है कि मेरे मन के अंदर कुछ अलग फीलिंग आ भी जाए, तो मैं आत्मा उसको अलग होकर देखूंगी, साक्षी होकर देखूंगी, डिटैच होकर देखूंगी. और जब दिखेंगी मुझे वो फीलिंग्स डिटैच होकर, तो मैं उस पर एक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा रियल नेचर क्या है. आत्मा का रियल नेचर है इमेंस लव. आत्मा का रियल नेचर है हम सब आत्माएं परम धाम की हैं. हम सब का एक ही बाप है, एक ही रिश्ता है. हम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं. ये मेरी फीलिंग होगी अंदर. तो जब ये फीलिंग होगी, फिर मैं एक्शन में उन फीलिंग्स को नहीं आने दूंगी जो लोअर है. मैं मेरी हाईएस्ट फीलिंग्स को एक्शन में लेकर आऊंगी. पर उसके लिए मुझे आत्मा को कॉन्शियस तो होना होगा ना. देखेंगे आप. और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आत्मा, सोल, मेरा इटर्नल ट्रुथ क्या है. मैं एक एक्सपीरियंसर हूं. मैं नेचुरली आई बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ लाइट. I am a soul who belongs to the world of light. The being of light that I am is immortal. अविनाशी हूं आत्मा. बीइंग ऑफ लाइट, मेरे जो पावर्स और वर्च्यूज हैं वो imperishable है, which means my peace can never be broken. My happiness can never be touched. This truth can never change. ये बिगर पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है आत्मा को. This bigger picture of this is the home of light and world below is a world of theater. But there is me, the real self, who is the actor. The real soul is the actor, the invisible actor, observer, and experiencer. I, the being, has come from the world of light and playing my part in this physical world. This physical world has a nature of ever change. Everything is constantly changing in this physical world, the material world, including the body. The body is also constantly changing. But I, the being, am not changing. I'm a soul. Eternally, I'm the same. I, the being, has no story. But when I, the being, come here, I play a part and the part has a story. I, the being, am from the world of storylessness. There are no stories in the world of light. But when I come from the world of light to the physical world and I wear a costume of the body, I have a part to play which has a script. And I play that part. But nothing about me, the soul, is changing just because I'm playing a certain part. It's like a Mickey Mouse cartoon show going on here. And in this Mickey Mouse cartoon show, I, the soul, have been given a part to play of a Mickey Mouse. And that's okay. Rini, the Mickey Mouse, is playing the part. And that's fine. But I should not forget, or if I'm forgetting, I am this storyless, indestructible being, and I start believing myself to be this destructible body, then I'm living in fear constantly. I'm defined by my role. I'm defined. Then the moment the soul starts to identify with the body, then I'm defined by my education. I'm defined by my culture, my job, my nationality, my skills. Everything of the body is mine now. Right? The soul is changeless.
Body is changing, the education, the culture, the job can change, the nationality can be from becoming Indian to American, the passport can change, everything can change. But the one who's not changing is the changeless self, the invisible experiencer who has come from the world of light to experience this physical world. Because there's no So would it be fair to say just by saying that I am a soul can eliminate 99% of your concerns, fears, or any problems that you have just by saying I'm a soul, because nothing happens to soul. Absolutely. The moment I have conviction, that is why Baba always says that, I mean, in our knowledge, the Supreme Teacher always says that where there is conviction, there is happiness. Where there is conviction about who am I, then there cannot be peacelessness, because the soul can observe the peacelessness of the mind also as a detached observer. Because soul is an observer. Soul is not just observing the physical world, soul is also observing its mind. Soul is an observer of both. So the timeless soul has come to the world of time. This becomes very clear. I am the soul playing a role through the body. Body is perishable, but I, the being, am imperishable. Body is time bound. I, the being, am beyond time. Body has past, present, and future. I, the being, has no past, present, and future. Body has other roles and other characters associated with it, but I, the soul, has only all the connection with the souls who will never die. So let's say Susan is playing the role of a mother, and there is this child playing the role of a son. If I, the soul, start to believe I am Susan and this body, then I will constantly live in the fear of losing my son, or concerned about the life of my son. And I will not see that soul as a soul, but I will see that body as my son. Automatically, subconscious panic and fear is there in that consciousness, in that awareness. Yeah. So knowing that I, the being, am eternally an experiencer, eternally a storyless being. I am not from this world of physical world. I'm from the world of light. This is very important. This is not my world. My world is beyond. I, the being, belong to the world that is the world of God. There's a natural feeling of brotherhood there. There's a natural feeling of we all have one home and one father. That is very clear. Then I can come to this physical world and play my part with freedom, with security. Sister, Yes. suppose for an example, if your daughter, the one who is playing the role of daughter, Rini's daughter, she comes to Rini and she asks her to prepare a particular dish, which will take another 1 or 1.5 hour. Like, but Rini is continuously connected with the Supreme Father. She and Soul is connected to the Yeah, the Supreme. soul is connected with the Supreme Father, and she has to take a class. So at that time also she will forget that she's someone's mother, and she has something to do with that thing, and she will just play the role of taking a class. So no, there will be communication, but from soul to soul communication, right? Then the soul can speak to the other soul, knowing that the other soul is also from the world of light, not as a mother speaking to my daughter. Then automatically there will be clash of egos. But when it's the soul speaking to the soul, there will come a sense of understanding also from it, that we can do the same thing, but maybe after the class. Okay. Yeah. There's not a sense of frustration or irritation. Even if it comes, it will be seen as a detached observer and not act upon it. That is very, very important. Yeah. So knowing who I am is the first key.
Knowing the self as this immortal being, timeless being, observer, experiencer from the world of light. This is not my world. We are repeating this again and again. This is not my home. My home is beyond. And as is my home, so is this home of all the souls. And this is a temporary world. I, the experiencer, has come here to experience this physical world, to have variety of experiences. When I have this awareness, then the security is not lost. I don't look for security in this physical world because my security is from who I am and from my world of light. My security, sense of security, is not coming from the physical world, because here, if I, the being, start to believe I am this body and I start looking for security in this physical world and through the name and the physical body, what will happen? Can you hold on to anything in this physical world which is ever changing? No, of course not. No, you can't. You can't guarantee that the house you have today will be there tomorrow. You can't guarantee that the body you have today will be there tomorrow. You can't guarantee the job you have today, will be having it tomorrow. You can't guarantee anything here. And the very nature of Also, in the previous example, wherein she was trying to say, like, if my daughter comes in and asks for food, and I'm attending a class at that time, if your perspective is soul, those things would not bother you, is yeah, with what I just learned. Like those things, like your daughter comes in, you're attending the class, that will flow like this, that the soul connection is such inbuilt connection that by yeah, default everything else would fall in place. absolutely, absolutely. Because you are more aware of your inner world and you're not concerned about the outside situation. Outside situation for the soul is perfect. Nothing wrong with the outside situation. What is happening in my inner world in every situation, that is important. And that is where the soul sees the whole drama as extra entertainment, nothing more than that. For me, the soul, from the home of light, I have come here for this extra entertainment. I'm just here to experience different human experiences. That's all I'm here for. And that is very clear to this changeless, indestructible being of light from the home of God. That tiny point is me. And so when I see, I know it's 7:23, Sister Hema, is it okay if we were to go 15 minutes over, because we spent some few minutes in the beginning in introduction? Didi, time is till 7:45. Oh, is it? Oh, okay. Yeah. All right. Thank you. Thank you. So, so what we see, our highest consciousness, our highest smriti is what we need to awaken to. Yeah. Because I, the soul, am truly simply here associating with the body, with the name, everything for a temporary period of time. But for me, the soul, it's very normal to be a star. My form to be a star is very normal. For me, the soul to have no name and form is very normal. For me, the soul to be from the home of light is very normal. For me, the soul to belong to the family of stars is very normal. It's not a foreign knowledge to me. I am that being of light. To be content is very normal for me, the being. Perfection of the soul that I am is very normal for me, the being. Belonging to God is a natural state for I, the tiny point of light. This is my starting position. This is my very first beginning position. And there is a physical world where the play is playing. And that is wonderful too. Yeah. So what do we see here? This example will help us understand it maybe more. So what do we see here? Do you know them? Does anybody Yeah, yeah, know them? yeah, definitely, definitely. These are the cartoon characters.
Yeah, what are they called? Mickey Yeah, Mouse. Mickey Mouse, Donald Duck. Yeah, Minnie and Mouse. the third one, I don't remember. Yeah, Minnie Mouse, Yeah, right? yeah. Yeah, That's Mickey, Minnie, and Donald Duck. Yeah, Mickey, Minnie, Donald Duck. But actually, it's not Mickey Mouse, Minnie Mouse, and Donald Duck. There is a real person behind it. In a limited way, we are looking at this example for now. There is a person behind it who's wearing that costume. But can we see that person? No. We are only seeing the costume and we are seeing the character's personality that is attached to that costume. The personality of Mickey Mouse that my mind has come to believe. The personality of Minnie Mouse, my mind has come to believe. The personality of a Donald Duck, my mind has come to believe. I'm actually just seeing that. I'm not seeing the real person. मैं देख रही हूँ real person को पीछे दिख ही नहीं रहा है वो तो उसकी तो पर्सनालिटी कुछ और ही है पर मुझे तो मिकी माउस दिख रहा है मुझे मिकी माउस की पर्सनालिटी ही दिख रही है होता है ना ऐसा एक बार ऐसा हुआ था एक्चुअल में कि किसी ने शेयर किया अपना ये एक्सपीरियंस कि वो स्टेज पर उनके कुछ फ्रेंड्स थे और ये पूरा प्ले चल रहा था जिसमें मिकी माउस मिनी माउस डोनाल्ड डक का प्ले चल रहा था और उन्होंने देखा कि उनका जो फ्रेंड जो डोनाल्ड उनको पता नहीं था कौन किसका पार्ट प्ले कर रहा है पर ये पता था कि डोनाल्ड डक जो है वो बहुत चिल्ला रहा था मिकी माउस के ऊपर और मिकी माउस बहुत रो रहा था स्टेज पर हाँ तो ये सब चल रहा था ऊपर स्टेज के ऊपर और फिर उन्होंने देखा कि जब वो स्टेज से नीचे उतरे और बाहर खाना खाने गए तो उन्होंने देखा कि अरे ये जो डोनाल्ड डक का पार्ट प्ले कर रहा था चिल्लाने का वो तो बहुत पीसफुल है और जो मिकी माउस का पार्ट प्ले कर रहा था वो तो कभी रोता ही नहीं है तो फिर ये तो ड्रामा के लिए सीन चल रहा था सिर्फ और कुछ भी नहीं था ये तो स्क्रिप्ट थी ड्रामा की और कुछ भी नहीं था उसमें तो जब उन्होंने भी अपनी कॉस्ट्यूम उतारी तो वो क्या कर रहे थे बाद में बैक स्टेज पे आपस में अभी तक लड़ रहे थे कॉस्ट्यूम उतारने के बाद या कॉस्ट्यूम उतारने के बाद वो जैसे कि बिल्कुल फ्रेंड्स जैसे कुछ हुआ ही नहीं था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था ना ऐसे ही तो था ना कि वो स्टेज के लिए Definitely, स्क्रिप्ट they were playing the role only, no? हाँ वो सिर्फ रोल प्ले कर रहे थे रोल में उसमें डोनाल्ड डक का पार्ट था चिल्लाने का और मिकी माउस का पार्ट था रोने का तो जैसे ही उन्होंने कॉस्ट्यूम उतारी उनको पता था कि ये तो प्ले के लिए था फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम उतारी और दे वर लाफिंग एंड स्माइलिंग एंड गिगलिंग एज दो नथिंग हैपेंड व्हेन दे वेंट बैक होम सेलिब्रेटिंग सेम थिंग हियर जब मैं मिकी माउस समझती हूँ ना अपने आप को तब मैं अपने रोल को भी सफर करती हूँ मैं अपनी स्क्रिप्ट को भी सफर करती हूँ मेरे मेरे साथ अगर डोनाल्ड डक चिल्लाता है ना सूजन के ऊपर तो फिर सूजन दुखी हो जाती है क्योंकि वो आत्मा अपने आप को सूजन समझ के बैठी है अपने आप को मिकी माउस समझ कर बैठी है दुखी हो जाती है भूल गई मैं आत्मा हूं भूल गई मैं परम धाम से हूं भूल गई मैं वर्ल्ड ऑफ साइलेंस से हूं जहां पे हम सबके बीच में बहुत प्यार ही प्यार है सोचने लगी जो ड्रामा के सीन में स्टेज पर हो रहा है ना हमारे बीच में वही रियलिटी है ऐसे समझने लगी तो व्हाट तो आर वी ये तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला हो गया कि अगर आप अपने आप को बॉन्डेड फील कर रहे हो तो इसका मतलब आप स्टक हो हाँ बिल्कुल आप अपने पार्ट में भी फंसे हुए हो और दूसरे को भी उसका पार्ट ही देख रहे हो क्लियर है ना ये तो Is it so if you are in a right samriti in the right awareness, but the other person who is playing this one's mother's role, she is not in a right awareness. Absolutely. And if she is not in the right awareness, she will always keep on seeing this one as a daughter and will keep on reacting like a mother and a daughter. But this one Yes. is in a good awareness, is in a complete right awareness. So how things will happen? Because you can't change the other person's awareness. एग्जैक्टली अगर आप अपनी राइट अवेयरनेस में होंगे
जैसे एक थिएटर में एक्ट भी चल रहा होता है, कोई अपने डायलॉग्स भूल जाता है तो आप अपना पार्ट भूल जाते हो, या आप अपने पार्ट को और अच्छी तरह से प्ले करते हो ताकि उसके पार्ट की गलती छुप जाए, है ना? राइट। जो ऑडियंस में देख रहे हैं उनको पार्ट में गलती नहीं दिखे, आप अपने पार्ट को और अच्छी तरह से प्ले करते हो, है ना? राइट। तो सामने वाली आत्मा अगर अपने आप को मदर समझ रही है और मैं आत्मा बिल्कुल क्लियर अवेयरनेस में हूं, मैं आत्मा हूं, वो भी एक ब्रदर सोल है, हम दोनों ब्रदर सोल्स परम धाम से, हम दोनों के बीच में इतना प्यार है, चाहे वो मुझे अभी कंफ्यूज होकर डॉटर देख रही है, पर मैं उसको बाबा के साथ परमात्मा के सामने उसको उसके रियलिटी में देख सकती हूँ। पता नहीं मुझे कितने न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, but but if there is awareness of who am I from the world of light, then it is very important to know that if I am in the right awareness, the other soul is also receiving right vibrations from me. तो अगर वो मदर के रूप में आपको कुछ डांटती भी है या कुछ अच्छा भी बोलती है, तो you as a soul will neither take pain nor take happiness or sorrow from her role, because you are aware. So your love will continue to flow, है ना? यस यस, Your love will continue to flow towards that soul. तो Okay. दीदी ये इसका मतलब ये भी है कि सबसे बड़ी माया तो आपकी बॉडी है। सबसे बड़ी माया है to be thinking I am my body. Body is not a problem. हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब ये सोचना कि मैं बॉडी हूँ, ये सबसे बड़ी माया और सबसे बड़ी गलती यही है। मतलब माया का रूप है बॉडी ये मैं हूं और रोल भी ये मैं हूं, बॉडी के साथ रोल भी आता है। वो रोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस ये दो अलग चीजें, ये हम देखेंगे और डिटेल में जैसे जैसे हम जाएंगे ना कोर्स के थ्रू। एक होती है बॉडी कॉन्शियसनेस, एक होती है रोल कॉन्शियसनेस, और कैरेक्टर कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं हम उसको, वो हम और डिटेल में देखेंगे आने वाले तो सेशंस। जैसे I agree कि we will look further into it, but at this stage, let's say you are playing 4 roles of X, Y and Z. अगर इन सारे रोल्स को जो आप प्ले कर रहे हो, उसमें आप अच्छा या बुरा या जजमेंटल ना हो तो भी आप काफी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे हाउ डज इट मैटर कि हु यू आर, लाइक यू आर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और व्हाटएवर योर डेजिग्नेशन इज, लाइक इट डज नॉट मैटर, राइट? Yeah, it does not matter. Internally, the feeling we are soul brothers playing different parts. And then how could you be judgmental for yourself? Like what role are you playing? Like whether are you playing a good role or bad role? That also is irrelevant. It is irrelevant, absolutely. पर जैसे हम देखेंगे कि माया अपना खेल पूरा खेल रही है, माया भी आने वाले टाइम में, अभी हम देखेंगे आने वाले दिनों में, how Maya is also playing its role, how ego mind does its own work on the side. But first, having this basic understanding is important, that I, the being, am from the world of light, I'm indestructible, I'm beyond death, I'm beyond being born, and beyond dying, I'm beyond death and life. So Body दीदी form, एक और बात ये होती है कि रिवॉर्ड से ही हमारा सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है पिछले कई सालों से, या कई जब से हम एज हो रहे हैं, राइट? कि अगर कोई हमें अच्छा कहेगा तो हमें अच्छा लगेगा, अगर कोई हमें ये बोलेगा कि आपने अच्छा काम किया तो हम और अच्छा लगेगा। तो सेम फॉर एग्जांपल दिस रिवॉर्ड सिस्टम इटसेल्फ इज इररिलेवेंट कि आपको क्या ही अच्छा लगना है और क्यों अच्छा लगाना है। हाँ, मुझ आत्मा को फर्क होना बंद हो जाएगा। ड्रामा तो जैसे चल रहा है मिकी माउस का डिज्नी वर्ल्ड में, जैसे ड्रामा चल रहा है वो एक्यूरेट है, मैं उस ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करती दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा, मुझे सिर्फ अपने आप में, अपने ट्रुथ में इंटरेस्ट है और सभी आत्माओं के ट्रुथ में इंटरेस्ट है मुझे। ड्रामा में किसका पार्ट, मिकी माउस रो रहा है, मिकी माउस हंस रहा है, मिकी माउस एरोगेंट है, मिकी डोनाल्ड डक काइंड है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, किसका पार्ट कैसा है, मुझे पार्ट से तो कोई लेना देना नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ एक उस आत्मा में जो वो पार्ट प्ले कर रही है, सिर्फ वो टाइनी से पॉइंट ऑफ लाइट में मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं खुद एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं उस टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट को देख रही हूँ कि मैं उसकी स्टोरी में फंस रही हूँ।
या मैं अपने आप को भी टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट देख रही हूँ कि मैं अपनी स्टोरी में फंस रही हूँ, ये चेकिंग। तो जब मैं इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को एक डिज्नी वर्ल्ड देखूंगी, और डिज्नी वर्ल्ड में हर एक कैरेक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, वो फिक्स्ड है, वो चलता जा रहा है, तो मुझ आत्मा को इंटरेस्ट डिज्नी वर्ल्ड भी एंटरटेनिंग लगेगा, क्योंकि मुझे उसका ट्रूथ पता है। अब कोई आ रहा है मेरे सामने और रोता है, तो मुझे उसका ट्रूथ पता है वो आत्मा कौन है। बाकी रोने का उसका पार्ट है, पार्ट चल रहा है, मैं उससे उसकी आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे उस आत्मा का सत्य स्वरूप पता है। और जो सत्य स्वरूप है वो है बहुत सुख का, शांति का। मैं उसको देखकर अपनी स्मृति में भी मैं खुद अपने आप को भी वही देख रही हूँ, उसको भी वही देख रही हूँ, और स्मृति में रहकर मैं मिकी माउस के शो को भी देख रही हूँ। तो मैं उससे बेचारी क्यों रो रही है, क्या हो गया, क्या करूं, उसको कैसे मदद करूं, उसको कैसे रोना चुप कराऊं, उस सब में नहीं फंसूंगी मैं ना किसी से दुख लूंगी ना दुख दूंगी। दैट बिकम्स वेरी क्लियर। कुछ घंटों का ड्रामा है इसमें, कुछ सालों का हो सकता है ड्रामा। ड्रामा है, क्या करना है, कहाँ फंसना है, नहीं फंसना है। हर एक का अपना पार्ट फिक्स। Sister, हाँ जी। sometimes what happen, although we are aware of all these things, but still something happen like that. Like दुख दे भी देते हैं, दुख ले भी लेते हैं. At that situation, what to do? वहां पर हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे आने वाले क्लासेस में। पर पहले ये बिल्कुल क्लियर कर लें, ये डिज्नी वर्ल्ड से ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर मिकी माउस रो रहा है या मिकी माउस हंस रहा है, मिकी माउस है, वो उसकी रियलिटी नहीं है। पहले ये बिल्कुल क्लियर कर लें ड्रामा लेवल पर आज की तारीख में। इट सीम्स लाइक आज हम जिनसे भी मिलेंगे हम उनको मिकी माउस या डोनाल्ड डक ही देखने वाले हैं। आप जिससे भी मिलेंगे ना, उनका पार्ट मिकी माउस और डोनाल्ड डक का है, पर इसके पीछे जो आत्मा है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, गॉड लाइक बीइंग है। कैसा भी पार्ट वो चिल्ला रहा है ना, आप अंदर आत्मा अपनी स्मृति में होंगे ना, आपको दिखेगा ये आत्मा तो कितनी, मैं जानती हूँ उसके सत्य को, उसका सत्य तो बहुत सुंदर और पीसफुल है। पार्ट भले ही होगा मिकी माउस की तरह चिल्लाने का, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो दीदी मैं ये बात उनकी, इतनी मीठी लग रही है आपके कहने की कि वो कोई डांट रहा है आपको और आप उसके पीछे देख रहे हो। ये कितना अच्छा इंसान है, कितना मीठा है ये, मतलब कितनी मीठी आत्मा है ये, कितनी प्यारी आत्मा है। मुझे उसका सत्य पता है, चाहे उसको इस मोमेंट में याद है नहीं है, पर मुझे याद है, तो मैं उस पर लाइट शाइन करूंगी। तो मैं फंसती नहीं हूं ना, मेरा प्यार अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो रहा है। पर आज हमारे ईगो माइंड में क्या होता है ना, मैं डेड को रियल देखती हूँ और जो रियल है उसको देखती नहीं हूँ, है ना। बॉडी तो डेड है, आत्मा के बिना तो बॉडी में जान ही नहीं है क्या जान बॉडी में, आत्मा में, आत्मा में जान है। तो आत्मा की तो नेचर, पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। कैरेक्टर मिकी माउस की पर्सनालिटी तो डिज्नी वर्ल्ड के हिसाब से शो के लिए दी गई है, एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं उसमें आत्मा क्यों फंसती हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं खुद अपनी कहानी में फंस जाती हूँ। इसलिए फिर मैं दूसरे को भी उसकी कहानी देखना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं अपनी कहानी के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती हूँ। ये सब हम देखेंगे आने वाले टाइम में, है ना। पर पहले तो हम ये देख लें, ये डिज्नी वर्ल्ड कार्टून शो बिल्कुल इररेलेवेंट है, सबकी फिक्स्ड स्क्रिप्ट चल रही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्क्रिप्ट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो किसी भी आत्मा का सत्य नहीं है। जो स्क्रिप्ट और पार्ट में चल रहा है ना, वो उस आत्मा का सत्य नहीं है। आत्मा का सत्य है कि वो आत्मा एम्बॉडीमेंट ऑफ कंटेंटमेंट है, वो संतुष्टता का स्वरूप है, चाहे वो कितना भी असंतुष्ट एक्टिंग कर रही है, आके कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रही है, पर मुझे उस आत्मा का संतुष्टता का स्वरूप मुझे पता है। कितना बड़ा तो सीक्रेट पता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बेस्ट एक्टर नहीं है, कोई बेस्ट एक्ट्रेस नहीं है, कोई वर्स्ट विलेन नहीं है, दे ऑल आर प्लेइंग और एक्टिंग।
मतलब सब अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। अरे सबका ऑस्कर अवार्ड विनिंग पार्ट चल रहा है, इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल लग रहा है ना? पर कुछ रियलिटी नहीं है उनके पार्ट में, कुछ भी रियलिटी नहीं है, कुछ भी रियलिटी नहीं है उनके पार्ट। Yeah, Sister Rini, one question. If I stay in the awareness, which sounds perfect, that everybody is playing a part, but then if anybody comes to me and approaches me, I'm in so and so pain, a situation of sorrow, am I supposed to be indifferent and just think it, she's just having some sorrow, why should I really get too involved in it, or just look at it as if a role is going on? Or should I really ask those questions? What is hurting you? And, how can I help you out of this mess or whatever? Is it wrong to ask? So first, my own smriti has to be right. If I'm seeing them as a person and I've already identified the soul with their character, crying, feeling bad, and I'm seeing them as bad, feeling sad. Firstly, I need to be in my right smriti. I am not Mickey Mouse and they are not Donald Duck. Yeah? I am a being of peace from the home of light, whose eternal nature is love, joy, peace, which is imperishable. Then how is it that that soul is feeling sad? It's just because that soul has identified with their characters, feelings. And so they are now expressing it as though they are their character. First, that clarity has to be there on my side. Then from that space, whatever words will come will be the right words to speak to them. What is needed will be spoken to them. तो Because now दीदी you ऐसा भी होता है इस केस में, जैसे कोई किसी somebody came to you and they were complaining or they were in pain, but you felt that pain and you were empathizing rather than listening, you were empathizing too. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इतनी पावरफुल सोल हैं कि वो सामने वाले की को रोना भी आप शांत करा दें, क्योंकि आपको पता है आप किस स्मृति में हैं और आपका कनेक्शन भगवान से है, तो सामने वाला जो कंप्लेन कर भी रहा है, sorrow में भी है, तो भी आपकी लाइट से वो एनलाइटन हो सकता है। इज़ दिस आल्सो पॉसिबल? या फर्स्टली, मैं अगर आत्मा हूं तो मुझे किसी के पार्ट को चेंज करने का हक नहीं है। पार्ट जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, वो परफेक्ट है इस मोमेंट के लिए। हो सकता है आने वाले मोमेंट में वो आत्मा अपने पार्ट को डिफरेंट तरीके से प्ले करे, पर सबसे पहले आत्मा के अंदर ये वृत्ति नहीं होती है कि मैं किसी के भी पार्ट को चेंज करूं। ये बहुत क्लियर हो, ये आत्मा की वृत्ति नहीं है, ये मेरे अंदर के किसी हेल्पफुल ईगो की स्मृति है। ये आगे ये थोड़ा सा एडवांस्ड हो रहा है, मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे बेसिक पे स्टिक होना चाहती हूँ। तो छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी इसको। जैसे किसी ने फोन किया था और वो उन्होंने फोन पे रो रही थी, वो आत्मा का पार्ट था रोने का। अब मैं आत्मा उनसे फोन पे बात कर रही हूं, पर मैं पहले अपनी स्मृति को चेक, मैं उनका दुख तो नहीं ले रही हूँ, मैं उसको दुखी तो नहीं देख रही हूँ कि ये तो बहुत दुखी है। तो मेरी वाइब्रेशंस उस आत्मा के प्रति कैसे जा रही है कि ये तो बहुत दुखी है। तो मैं आत्मा को तो देखना ही भूल गई, मैं मिकी माउस के रोने को ही रियल समझने लग गई, है ना? तो पहले तो मैं आत्मा अपनी स्मृति में आई, मैंने अपने आप को देखा। और जैसे हम आगे देखेंगे कि हम कैसे सुप्रीम सोल से कनेक्ट होते हैं, तो जब मैं आत्मा अपने ट्रुथ से कनेक्ट हुई तो मुझे लगा मेरा ट्रुथ तो इतना ब्यूटीफुल है, इम्पेरिशेबल है, अनब्रेकेबल है, अटूट है। तो इस आत्मा का भी तो ट्रुथ जो है बिल्कुल इम्पेरिशेबल है, अटूट है, अनब्रेकेबल है। तो फिर ये रोना क्या है? अच्छा, ये आत्मा सिर्फ अपने पार्ट से आइडेंटिफाई कर चुकी है, इसलिए वो एक्ट में आ रहा, और कुछ नहीं हो रहा है। ट्रुथ तो इसका बहुत ब्यूटीफुल है। पहले मेरी स्मृति, वो पहले अपनी स्मृति के लेवल पे चेक करके चेंज किया। फिर जो भी वर्ड्स निकले ना, बहुत कम वर्ड्स निकले, पर वो आत्मा ने सुने मुझे। आगे हम बोलेंगे वो वाली बात, अंदर मेरे मन के अंदर मुझे क्या दिखा वो सब बाद में। पर अभी पहले सिर्फ इतना कि
वो जो आत्मा है उसको जो फीलिंग वहां से आपके यहाँ से आई, उसको उसके ट्रुथ के ऊपर किसी ने लाइट शाइन की, उसके पार्ट को उसकी रियलिटी नहीं समझी, पर उसके ट्रुथ पर लाइट शाइन की। तो अब वो कैसा उसका पार्ट चेंज होता है नहीं होता है, वो उसका अपना पार्ट है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। इस केस में वो आत्मा ने ज्ञान लिया, पर हो सकता है ना भी ले किसी केस में। हो सकता है किसी केस में वो ना भी ले, पर मेरा मकसद उसके पार्ट को चेंज करने का नहीं था। मेरा मकसद था मैं इसकी लाइट, उसके ट्रुथ को देखूं, जैसे परम धाम में, होम ऑफ लाइट में उसका ट्रुथ है, उसको मैं देखूं और किसी चीज को मैं नहीं देखूं। बाकी ये टेम्पररी पार्ट है, टेम्पररी रोना है, अभी रोने का है, थोड़ी देर में हंसने का पार्ट हो सकता है। पार्ट तो चेंज होता रहेगा, एक्ट तो चेंज होता रहेगा, ये इसका इटर्नल ट्रूथ नहीं है। दैट विच इज चेंजिंग इज नॉट द ट्रूथ ऑफ द सोल। हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं कि आई एम नॉट द डायरेक्टर फॉर दिस सीन, वेरी व्हाटएवर इट गुड, इज, वेरी it गुड। is it is इट इज, like I cannot say cut, or it's real time live thing gonna happen, and somebody else is directing. All I'm the I'm the script that I'm reading, and I'm playing my part. absolutely very good. I am not, don't try to become a director. I'm not the director of this play. So let me not try and fix everyone's part. Let me just check and see, do I remember my truth and can I see their truth? That is very, 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 very important. First basic foundation. Yeah. So, Sister Rini, just wanted to a little bit recap. I just joined. So let's Uh-huh. say, in the modern world, when everybody meets for parties or shadi and all these get-togethers and all, तो basically वो सब अपने एक दूसरे को रोल बता बता के खुश होते रहते हैं. मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, right? And उसी से अपने आप को inferior feel करते हैं, oh, I'm a doctor, oh, I'm just a housewife. Inferior or superior feel करते रहते हैं, but it's just a fixed part, which we don't have control over, right? Exactly. And it's a part we enjoy because my truth is so beautiful. So from my place of truth, I enjoy even the part of a servant. Because that's because we know this knowledge, but I'm just saying, people who don't have knowledge. So basically, कुंभकर्ण की नींद और अंधेरा सब यही है कि हम एक दूसरे को पार्ट दे के अपने आप को सुपीरियर और इंफीरियर फील करते रहते हैं. बिल्कुल. But otherwise आत्मा सब equal है, एकदम 100% equal. Exactly. Yeah. There's absolute equality at the level of the soul. Nobody is better or worse, senior or junior, less or more, inferior or superior. That is why और जो हम फील करते हैं कि मैंने इतना अचीव किया, there is no such thing like that, right? Oh, I accomplished so much. I did masters, I did PhD. Yeah. All these are not like, ये सब ego mind का talk है, जो कि हम next chapter में देखेंगे. Exactly. Yeah. तो वो सब So I just wanted to recap that. Yeah. Right. Absolutely. तो हम अभी सिर्फ Mickey Mouse show देख रहे हैं, and we understand this is just a Mickey Mouse play going on. So I, the soul, am I identified with my Mickey Mouse part? Then I will see my family as just this 4-5 people of Mickey Mouse in my family. Huh? So it becomes very important. What is my smriti? Then because based on that will be my perspective. And from my highest smriti, I can see, as we said earlier also, all the lower feelings, lower emotions of lower smritis. I can see that very clearly. But when I'm not in my highest smriti, then I play my part from my lower smritis. I become a lower smriti, and then I play my part from that lower smriti. Yeah? So this is very important. There's no reality in this physical world other than the fact that it is just a cartoon show going on here. And the real living beings are the souls who are from the world of light, and they belong to the world of supreme light. And nothing about them is ordinary. They are extraordinary beings, and that they is us, that they is you and me, the real living conscient beings of light. And so we see that when I, the being, know that I'm here in this physical world for a short period of time, playing my part, and there is an exit also.
I'm not here forever, but I will go back home. So this is the time for supreme love. This is the time for knowing that I am that soul who has extreme love for myself and love for all the beings of light. And my home is where I come from in this physical world to play my temporary parts. This is very important foundation. Anyone has any questions at this time? Didi, there was a question in chat. Oh, okay. सिस्टर अगर इस वर्ल्ड को मिकी माउस शो समझेंगे और हमारे वर्ल्ड तो परम धाम में है, तो हम इस वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करेंगे? इस वर्ल्ड की सारी वंडरफुल चीजें सब यूजलेस होंगी हमारे लिए. Very good. Okay. तो अगर हम इस वर्ल्ड को मिकी माउस समझेंगे ना, तो हम इस वर्ल्ड को और ज्यादा एंजॉय करेंगे. क्यों करेंगे ज्यादा एंजॉय? फिर हमें कोई भी यहाँ की चीज पुल नहीं करेगी. एटलीस्ट जो एक्सटर्नल चीजें हैं, एक्सटर्नल जैसे आज हम क्या है, हम आज माया की चकाचौंध में फंस जाते हैं ना. इसीलिए हम अगर ड्रामा से दुख भी लेते हैं तो ड्रामा से सुख भी लेते हैं, और ड्रामा से सुख भी लेते हैं तो फिर ड्रामा से दुख भी लेंगे. तो ये जो वंडरफुल चीजें हैं ना, यूज करने के लिए है, आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है. सब यूज करना है, सब कुछ यूज करना है. बॉडी को भी यूज करना है, जॉब भी करना है, पर अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी है जॉब से. अपनी नेशनैलिटी को भी लिव करना है. पासपोर्ट जो है वो रखना है, फेंकना नहीं है. क्योंकि वो पासपोर्ट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा, पर वो मैं नहीं हूं. न मैं इंडियन हूं, न मैं अमेरिकन हूं, मैं परमधाम की निवासी हूं. तो अगर कोई आपको पूछे ना आप कहाँ से आए हैं, तो बोलना मैं परमधाम की निवासी हूँ. अंदर ही अंदर. हाँ, बाहर जो भी यू बोलना है वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बोल रहे हैं, पर अंदर ही अंदर क्लियर हो कि मैं यहाँ की नहीं, मैं परमधाम की हूँ. यहाँ पर तो मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ अमेरिका में या इंडिया में रहने का. वो नेशनैलिटी का एक पार्ट प्ले हो रहा है. तो ये बोलते हुए भी याद रखना चाहिए अंदर. नहीं तो सीधा हम बोलते हैं, ओ आई एम एन इंडियन, I am from Punjab. I'm a soul. Internally, your feeling is the soul from the home of light is speaking to other soul. And if it's a passport office and I have to let them know where I'm from, then I will say that, yes, I live in America, but internally I know I'm a soul and we both belong to the home of light. We both have come here from home beyond, and you're playing the part of a passport officer and I'm playing the part of a visitor. Internally, that's very clear when you're speaking. Externally, for external purpose, you're Now, saying... here, I just wanted to ask one more thing, since we've always learned that our thoughts and words should be in sync with each other. And that's what we've been taught. So won't there be like a clash? What I'm thinking inside Very and what I'm good saying outside? question. Very good question. No, because internally, you know that I, the being, originally am from the world beyond, but what I'm saying is my part is from here. My part is that my part is in the US. Your part is in the US or India, wherever it may be. The part is here. It's not wrong. It's not false that I'm speaking. The part is being played within this physical world, within this physical vocabulary, in the physical world, it is in the US. So I'm speaking that which is the truth of the part. But my eternal truth that from where I am is not forgotten as a result. Right? Because Yes, the one thank who's you. playing, yeah, does that make it clear? Yes, yes, very clear. Thank you. Because it's like the soul behind Mickey Mouse role and the Donald Duck role, they remember that they are friends. Even whilst on the stage, they may be having the part to fight or make each other cry, but they remember that they are. Is it very clear? Just to recap it, and then we will finish it here. To recap it. Hello, ma'am. Can I ask one question?
Sure. And this is about the soul. If I am the soul and I am only playing a part, then why am I so good sometimes and so bad sometimes? I feel very guilty if I shout at somebody, or I'm rude, or I've done something wrong. But then I should think that this is my part. I should not feel guilty. Yeah, and we will see that also. That is what we are going to address. So today we have seen that I'm a soul and not the body and the role, and how the ego plays its part will be in our coming sessions. Yeah, and how we bypass that ego. That also we will see in our coming sessions. Thank you, ma'am. Thank you. But today it's very important to know that I'm a soul from the world of light, not just a soul, but a soul who is got no story of its own. Soul has got no story of its own. Soul is never going through any change, and soul is forever timeless, which means the soul itself has no past, present, and future, but the part has past, present, and future. Body has past, present, and future. Body is changing, but the soul is not changing. Let us make sure that this is very, very clear. And soul has literally come here to this physical world for an experience of change. Because there's no experience of change in the home. The soul has come to this physical world for the experience of change, for the experience of unpredictability, for the experience of a beginning and an end. That is what the soul is here for. To have experiences. Yeah, that is clear understanding in the first session. Is it for everyone? Yes, ma'am. Thank you. Yes. Yes. Okay. So let us take a moment. Ma'am? Shivya wants to ask something. Yes. Yes, ma'am, I wanted to ask that I had a query in that part where somebody had asked in the starting, where if the soul, I mean, if the body gets hurt, how does the soul like feel the hurt and the radiation? So I didn't like fully understand that part. Like, if the soul and body are separate, so how can like when we can still feel the pain if we like get hurt or something? How does that happen? Yeah, so the soul is feeling the pain, soul is experiencing the pain, but not making an identity out of the pain. So for example, let's say there is a cut in my hand. I will not say I am hurt. I'm experiencing the pain, yes, but I, the being who's separate from the body, but using the body, experiencing the pain in the body, I will say my hand is hurt, not I am hurt, but my hand is hurt. So I am detaching from the pain. Although I'm feeling the pain, I, the soul, am experiencing the pain through the body, but I'm not making an identity of it. So then I'm not suffering it. So pain is there, experience of the pain is there, but suffering is not there. Does that help? Got it. Thank you. Thank you. So let's take a moment. And always coming back to our eternal reality. And the most beautiful thing about the truth is that truth is constant, truth is changeless. Once this foundation is very clear and complete conviction that I, the being, the invisible experiencer, has come from the home of light,
to enjoy this Disney world, which has huge variety of experiences. In my world of light, there's simply an experience of peace. But in the physical world, there is a variety, contrast, richness of experiences. But that richness can only be experienced as richness when the invisible experiencer is awake to his ever-present, silent, unchanging truth. Then he can enjoy all the changes from the background of silence. He can enjoy the sounds of the physical world. From the background of immortality, he can play with the game of life and death of the body without any fear, knowing that the end of the body is not the end of the soul. So he will use the body with the highest respect. Use the body in a way which is in alignment with the nature, the true nature of the being. Because the nature of the soul is constantly radiating respect and love unconditionally. And body will receive that as the very first thing, respect and love from the soul. But first understanding, I am a soul, changeless, interacting with this physical world of change, with the physical body that is changing, with the roles that are changing. So now I'm not afraid of change. I welcome change. Om Shanti.